হাই ফ্ৰেণ্ডছ, SSC GD 2026 ভেকেঞ্চিটোৰ বাবে যিহেতুকৈ মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট জিকে যিবিলাক কমন অহাৰ চান্স খুব বেছি থাকে, চ' তাৰ ওপৰত মই চুটি ভিডিঅ' দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ তোমালোকৰ মাজত। আৰু এই ভিডিঅ'কেইটা তোমালোকে যদি এনে মোবাইলটো হাতত লৈ থাকোঁতেও যদি চাই থাকা, ইয়াৰ পৰা কমন অহাৰ চান্স খুব বেছি, কাৰণ মই তেনেকুৱা কুৱেশ্যনে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ মাজতে বহুতে ক'ব বিচাৰে যে দাদা আপুনি অকণমান কষ্ট কৰি অসমীয়াত দিয়ক ভিডিঅ'খিনি বা ইংলিছত দিয়ক। চোৱা, মই কিয় দিয়া নাই তোমালোকক কওঁ। ফাৰ্ষ্ট কথাটোতো হ'ল এডিটিঙত বহুত টাইম লাগে, আৰু যিটো মোৰ হাততো অলপ সময় কম থাকে। তাৰ বাদে আমাৰ অসমীয়া লেংগুৱেজ বা ইংলিছ লেংগুৱেজটো সকলোৱে প্ৰিফাৰেঞ্চত নাৰাখে, কিন্তু হিন্দীটো এটা এনেকুৱা লেংগুৱেজ যিটো সকলোৱে বুজি পোৱাত অলপ হ'লেও সহায় হয়। চ' মই হিন্দীতে ভিডিঅ'বিলাক দিম, সময় যিহেতু খুব কম, তোমালোকে ইয়াতে চাব লাগিব নিজে বুজি পেলাই। চ' মই আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আৰু পাৰিলে তোমালোকে ভিডিঅ'কেইটা চাবা, ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু লগতে অলপ পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। নিম্নলিখিত में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। এইকেইটা তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট চাবা। তাৰপিছত 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? मिजोराम। साक्षरता दर মানে তোমালোকে বুজিয়ে পাইছা, শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা কৈছে। 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? मिजोरम। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति के लोगों की साक्षरता दर क्या है? 59%। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष है? नेपाल। ভাৰতৰ ওচৰত লাগি থকা এখন দেশ বা পড়োচী, যিহেতু ওচৰৰে বুলি কৈছে, তো নেপাল হ'ব। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? फेब्रुआरी 2024। এইটো দিয়া আছে চোৱা। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए अधिकृत है? संसद। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? मिजोराम। कर्क रेखाডাল কোনখন ৰাজ্যৰ পৰা মানে পাৰ হৈ যায় বুলি কৈছে? মিজোৰাম। बास्केटबॉल खेल में एक बार में मैदान पर एकल टीम के खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल खेलोते মানে ফিল্ডত কেইজন খিলাড়ী থাকে বুলি কৈছে? 5 জন। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी। আৰু এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক SSC GDত খুব বেছি অহা দেখা যায়। कान्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540। 1540। निम्नलिखित में से किस योजना को मोहालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? दूसरी पंचवर्षीय योजना। আৰু SSC GDৰ কথা সকলোৱে জানা যে পঞ্চবৰ্ষীয় যোজনাৰ ওপৰত এটা হ'লেও কুৱেশ্যন থাকে, আৰু লগতে এইবিলাক সব SSC GD লেভেলৰে কুৱেশ্যন হয়। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव का जन्म निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1469। 1469। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार और उत्पादकता में वृद्धि करना था, जिसमें भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित किया गया था? सातवीं योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन किस संगीत घराने से संबंधित थे? पंजाब घराना। भारतीय जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर मानने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 7 वर्ष। किस संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया? 101 संशोधन अधिनियम। তোমালোকে পাৰিলে उत्तरটো জনাবা। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 का लक्षित विकास दर कितना था? এইটো জনাবা। তোমালোকে পাৰিলে চাই পেলাই নজনাবা, নিজৰ জানিলে জনাবা কমেণ্টত, আৰু তেনেকৈ তোমালোকৰ এটা ভাল হ'ব, মনত থাকিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে, আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু এই প্ৰচেছটো মই যিহেতুকৈ এক্সামলৈকে লৈ যাম শেষলৈকে, চ' সকলোৱে চাবা, আৰু যিমান কমন আহে তোমালোকে জনাই যাবা। ধন্যবাদ। জয় আই অসম। আৰু নতুন কেণ্ডিডেটবিলাকে জব এণ্ড ডিফেন্সৰ লগত জড়িত হৈ ল'বা। ধন্যবাদ।